अरे भाई, ये जो नया ट्रायम्फ का थ्रक्सन 400 आ रहा है ना, मुझे सच में लग रहा है बहुत बढ़िया बिकने वाला है। एंड यू नो व्हाट, देयर इज ऑलवेज बीन दिस चार्म अराउंड कैफे रेसर्स, एटलीस्ट फॉर मी। लो संग ट्रैंक्स, उसके रियर सेट फुट पेग्स, क्लिप ऑन हैंडल बार्स एंड दैट होल विंटेज रेसिंग डीएनए। एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम वी हैव हैड ओनली वन kind of a cafe racer which is in the budget segment, which is a Continental GT60 from Royal Enfield. Now, don't get me wrong, I've always loved that motorcycle. It has got a great engine. That parallel twin is super smooth and amazing, and the overall value for money product is there. It comes in very good, exciting colors, and I almost bought it a few years back. Yes, so let's be honest. It's not a full-blown cafe racer. It lacks that sharp raised bed looks and the geometry, and the silhouette is also not like that. And it's also big and heavy, and it is not for everyone. So now the Triumph could be launching the Thruxton 400. At least that's what we can see in the teaser which Triumph has posted. And this could finally be the perfect entry-level cafe racer. Lighter, more accessible, and built on brilliant Speed 400 platform. This bike will combine modern engineering with a proper vintage soul. And it's not just about the looks, it's performance, agility, and everyday usability could make it the most fun cafe racer style bike in the market right now. Honestly, if priced right, this could dominate the retro segment completely. और सच कहूँ तो मुझे खुद टेम्पटेशन हो रही है कि ये मैं लेने वाला हूँ. आई मीन आफ्टर द स्पीड 400 एंड स्क्रैम्बलर 400X एंड द T4 एंड द XC, ट्रायम्फ ने दिखा दिया है कि दे अंडरस्टैंड व्हाट एन इंडियन राइडर वांट्स. इन दोनों मॉडल्स, इन फैक्ट चारों मॉडल्स ने जो सेल्स रिवाइव किया है, एंड अमेजिंगली आई थिंक 2 years later they want to bring out the Thruxton 400, and it definitely carries that heritage racing pedigree and that design language, and that's what everyone loves, right? अभी तक ऑफिशियल स्पेक्स तो फुल्ली नहीं आए बाहर, बट from what we know, it's going to share the same 398cc engine from the Speed 400, so around 40 PS of power, smooth power delivery, and that linear torque. And with those cafe racer ergonomics, I think it is going to feel really, really different. It will be fun. I expect clip-on bars, bar and mirrors, a sculpted tank, and even those rear set foot pegs for that committed riding stance. एंड अगर ट्रायम्फ ने उस क्लासिक ट्विन पॉड जैसा एनालॉग कंसोल दे दिया तो फिर तो बात ही मजा हो जाएगा. एंड आई थिंक आई एम गोइंग टू बाय वन, एंड आई थिंक पीपल वुड लव टू कस्टमाइज दिस बाइक एज वेल. दिस इज सुपर स्टफ डेफिनेटली. लुक वाइज भी अगर मुझे लगता है दे ब्रिंग इन दैट मैट ग्रीन या डीप ग्रीन कलर जो थ्रक्सन 900 1200 में आता था, that will be like amazing, and it will be perfect mix of nostalgia and practicality. Pricing wise, I would expect 2.7 lakh के आसपास आना चाहिए एक शोरूम, जो कि अच्छा रहेगा, and that is definitely going to rattle the market, especially for people who want a good looking bike, agile machine that turns heads but doesn't burn your pocket. Then definitely I think this is going to be a very, very good motorcycle. And I think it's the right time as well, right? Royal Enfield has been here for such a long time, and Honda Yamaha को तो कुछ कर ज़रूरत पड़ती नहीं है. They, I think they are busy selling their scooters, तो उनको तो इस सेगमेंट में आना ही नहीं है. So I think this is Triumph's moment to own it. तो आपको क्या लगता है, क्या आप रियल कैफे रेसर के लिए रेडी हो? दैट्स लाइट, इज ब्यूटिफुली लुकिंग, एंड इट हैज़ गॉट ग्रेट परफॉर्मेंस एज वेल. लेट्स सी व्हाट ट्रायम्फ अनवील्स ऑन 6th of August. What are your thoughts? Do comment below, and definitely share, like, and subscribe for more such videos.